My name is Hameed, sir, and on behalf of Institute of Freelancing and Peer Finishing School, I welcome you all. Based on yesterday's lecture, I'm pretty sure some of these students, they have done a brilliant work. I mean, I'm very much proud of my students. Those are actually doing some basic exercises, but I'm extremely very surprised to see कि मैंने जो आपको forward किया था आप वही मुझे forward करें. So that would not be the fair idea. It's better that you should try to develop these kind of articles by yourself. So that कि अगर आपने yesterday वाला session नहीं किया तो you got to believe me on this कि आज वाला session would become a little bit more difficult, a little bit more demanding. So अगर आपने previous वाला miss कर दिया, so that is quite obvious कि आज वाला session भी that would be very difficult for you to understand. So that is why I always make it possible for all of you students के recordings upload हो जाएं and you actually go through all of those recordings on regular basis and continuously उसको बार बार review करते हैं so that के आप अपने अपने articles अपने अपने designs की तरफ चल सकें. Inshallah tomorrow we will be starting our formal dressings की तरफ हम switch कर जाएंगे. So today is the last lecture as far as your casual shirts are concerned. अच्छा जी, yesterday हमने with the help of pen tool अपने अपने templates क्रिएट किए थे और वो टेम्पलेट्स इसलिए क्रिएट किए थे सो दैट कि आप अपनी मर्जी से उसके ऊपर नॉट ओनली योर ओन लोगोज योर ओन डिजाइंस वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने वेयरअप्स के ऊपर खुद से कर सके. सम ऑफ देम हैज डन अ ब्रिलियंट वर्क. उनके पास जो जो अपने एक्सपेरिमेंट्स हो सकते थे, especially I just not want any specific name like Asfan just saying he has done a good job, rather a great job. I mean that is the professional way you should have been picking up the path. That's the 100% the right path. So that is I want के सारे अपने अपने जो जो आपके डिजाइन्स जो जो आपके लोगोज जो जो आपके आर्ट वर्क क्रिएट हुआ हुआ है इट्स बेस्ट के आप उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्किंग स्टार्ट करें. अच्छा जी, लेट्स सपोज दिस इज समथिंग वी हैव डेवलप्ड yesterday और yesterday से onward today we are going to start another chapter today. First and foremost, कोई भी आर्टिकल इफ यू रिमेंबर द स्टार्टिंग क्लासेस, इफ यू रिमेंबर कि वो कौन सा कलर होता है जो कि इनिशियल फैक्ट्री से जो आपके पास एज फैशन डिजाइनर्स आपके पास वो कौन सा कलर का अपैरल पहुंचता है आपके पास, या फाइनल शर्ट आपके पास किस कलर में पहुंचती है फ्रॉम द फैक्ट्रीज फॉर यू टू टेक द एक्सपेरिमेंट्स. 100%. Absolutely correct. That is something, Azra, very well done. Arshad, Aisha Tahir, and Aswan, very well done. Exactly. That is by default the colors which is actually reaches to you being fashion designers to start thinking on those lines कि मैंने इसके साथ क्या करना है. Let's suppose if we spoke about Nike, which is actually sports wears में ज़्यादातर use होता है, they don't go for multicolors या बड़ी different type of experimental themes के ऊपर इस तरह नहीं जाते. लेकिन there are still some brands जो के मल्टी कलर्स पे जाते हैं. वो मल्टी कलर्स उनकी मार्केट और टारगेट ऑडियंस ही वो वाला होता है. सो लेट्स सपोज इफ वी कंसिडर आवर क्लास, हमारी क्लास में से भी मोस्ट प्रोबेबली there are 40% they would go for the plain colors, 40% would go for the multicolors, and remaining 20% are neutral, like somehow they are interested in any different sort of things, not necessarily 100% this, not necessarily multicolors, they are with their own styles. So this happens जब आपकी मार्केट की रिसर्च होती है. ठीक, तो आज का ये बनाया हुआ टेम्पलेट मैं इंशाल्लाह ये भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा आफ्टर द क्लास सो दैट कि आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर सकें. एंड फर्दर जो आज की क्लास में हमने करना है एंड दैट इज कि एक ही कलर के डिफरेंट वेरिएशंस हम कैसे बनाएंगे. Got it? So the most important class, the most important chapter of our session कि हमने एक ही article को, let's suppose if this is in white or if this is in any other color, हमने कैसे इसको multi colors में divide करना है. This is something which we are going to learn in the Photoshop today. So let's get started first. एज यू नो हमारे पास टेम्पलेट एक डिजाइन आया. टेम्पलेट को हमने एक्सपैंड करना है अपने आर्ट बोर्ड को टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम वन. सो हाउ कैन यू डू इट? यू जस्ट गो टू दिस इमेज वन एंड कैनवस साइज से जाके आप परसेंटेज वाइज
सिर्फ और सिर्फ इसकी विड्थ को आप 200% कर देंगे, सो दैट मीन्स कि द ट्वाइस द साइज वी आर इंटरेस्टेड. सो लेट सपोज इफ दैट इज द आर्टिकल, मैं इसको उठा के ड्रैग करके बिल्कुल ऑलमोस्ट यहाँ पे ले आता हूँ, एंड लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस, बिकॉज मेनली हम इसकी कॉपीज बनाते हैं किस तरीके से, आर्ट की के साथ इसको ड्रैग करें विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की, एग्जैक्टली इसके पैरेलल ये दूसरी कॉपी आपके पास आ गई. ओके, सो नाउ वी हैव टू कॉपीज. एक के ऊपर हम यही कलर रखेंगे, दूसरे के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, सो दैट कि हमारा चॉइस का कलर दे शुड पॉप्स आउट, या वो नया बन सके, या वो कैसे बन सकता है, दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो फर्स्ट हमने ये करना है फ्रॉम द लेयर्स, एज यू नो कि हमारे पास देयर आर टू लेयर्स, राइट, दिस वन एंड दिस वन. लेयर नंबर 0 के ऊपर दिस वन, एंड लेयर नंबर 1 के ऊपर इज दिस वन. सो लेयर नंबर, इसको लेट सपोज हम इसको हम कोई भी लेयर नंबर 0, या दैट इज आवर बेस लाइन, राइट, एंड दिस इज आवर कोई भी कलर, लेट सपोज जो भी कलर हम देंगे, को मैंने प्री सेट माइंड में नहीं बनाया हुआ कि मैंने कौन सा कलर इसको देना है. हम कोई भी इसको कलर देंगे, और कोई भी कलर वेरिएशन बनाने के बाद हम इसको रीनेम कर देंगे विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस. So how can you do it? Let's suppose the layer has been selected, and let's go to this image and adjustments. Adjustments se jaake the first and foremost is the brightness and the contrast. If you're interested to make it more brighten and more contrast, so that is something very easily you can create. And contrast ko bilkul zero kar denge, to this would be a kind of बिल्कुल फीका सा कलर नजर आना शुरू हो जाएगा. बाय डिफॉल्ट इट इज 0%. 0 मीन्स के डिफॉल्ट का कलर, एंड जैसे जैसे आप इसको 100% की तरफ लेके जाएंगे, दिस वुड बिकम्स मोर ब्राइटन एंड ब्राइट. जिस भी कलर के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, अब आप देखें दिस इज द सेम शर्ट, सेम कलर, लेकिन कैसे उसकी वेरिएशंस में चेंजेस आना शुरू होगी. आई एम मेनली इंटरेस्टेड कि आप इनमें से किसी एक को ओके करें, एंड लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस. How can you do it? Let's suppose F7 से आपने इसको open किया and make another copy of this. Now this is almost, you can say, let's suppose ये is a yellow color, okay? And we are going to have another experiment, and that is on this color, and मैं इसको drag करके almost center में ले आता हूँ. Okay, and let's again go to this image, more adjustments, and adjustments के, these are the levels which you have to experiment first on this. First यहाँ से इसको darken को कम करते जाएंगे, means इसमें जितना black है उसको कम करते जाएंगे. Automatically join नहीं हो रही. I'm surprised. Why is that so? Because it's a list which is available with me. Just ask them, just send them a message to either restart your Zoom so that के वो हमें join कर सकें. Okay, but no worries. I assume yeah the recording is on. अच्छा जी, देखें येलो इसमें से अगर हम ब्लैक को रिड्यूस करते जाएंगे, so what would happen? Automatically this would come more brighten, more and more brighten होता जाएगा. So let's suppose ये देखें मैं इसमें से येलो इसमें से करता जा रहा हूँ, so it's becoming white. ठीक है, इट्स नॉट लाइक दिस, ये वाला व्हाइट कलर नहीं है, सो आई एम इंटरेस्टेड समथिंग लाइक दिस, एंड मे बी व्हाट यू कैन डू इज वॉइस वर्सा. लेट्स सपोज ब्लैक को इधर ही रहने दें एंड व्हाइट को कम करते जाएं, दिस वुड बिकम डार्क. ठीक है, सो हैव अ लुक एट दिस, ऑलमोस्ट क्वाइट रीजनेबल तक की सेंस पे आप जाएंगे, एंड फर्दर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्ले विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, करेक्ट. एंड यहाँ से व्हाइट कम करेंगे, यहाँ से दैट इज सेंटर पॉइंट 100%, एंड इसको लेट सपोज मैं करता हूँ कैंसिल. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. मैं जस्ट आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, एडजस्टमेंट से कर्व्स और ये बेसिक टूल्स आपको बता रहा हूँ. बाकी चॉइसेस योर्स के, इनमें से किसको अप्लाई करना है, किस लेवल पे अप्लाई करना है, दैट इज समथिंग अगेन वेरी मच योर चॉइस कि आप क्या बनाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज के लेट सपोज हम यहाँ से जाके सेंटर पॉइंट से इसकी कर्व को क्रिएट करते हैं, एंड इसमें ब्लैक एंड और कम कर देते हैं, या किसी भी एंगल से जाके कोई भी एक नया कलर, नई स्कीम विद द हेल्प ऑफ बेसिक कर्व्स टूल्स हम ये क्रिएट कर देते हैं.
ठीक है. So let me undo this. That is another option. Now the third option is कि adjustment से जाएं and creates levels curves के बाद exposure पे जाएं और simple इसका exposure को थोड़ा सा expand करना शुरू कर दें, लेकिन this would not be of that size, इतना ज़्यादा नहीं होगा, and almost to that level. राइट. सो इन तरीकों से यूटिलाइज करते करते आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस बनती जाएंगी. लेट्स सपोज मैं इसकी बनाता हूं एक कॉपी और उसको मैं प्लेस करता हूं समवेयर हियर. ओके. एंड लेट्स सपोज इसके ऊपर वी मेड अनदर एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम रीप्लेस कलर. रीप्लेस कलर से जाके मैं इसमें से ये सारा का सारा चूज करता हूं, ये येलो वन, एंड ह्यू एंड सैचुरेशन से जाके मैं थोड़ी सी इसकी वेरिएशन से लाइटन एंड सैचुरेशन को थोड़ा थोड़ा कम या थोड़ा सा और मैं ज्यादा कर देता हूँ. सो दैट्स हाउ यू कैन मेक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. देखें इसमें से हल्की हल्की वेरिएशंस, ये लाइटिंग्स और इन चीज़ों को कम या ज़्यादा करने से यू कैन कम अप विद अ न्यू वेरिएशन दैट इज दैट विल कम अप विद अनदर वेरी वेरी बिल्कुल ब्राइट कलर की बिल्कुल आपके पास स्कीम आना शुरू हो जाएगी. सो लेट्स सपोज मैं सारी के सारी को एक दफ़ा ऑफ करता हूँ एंड लेट्स टेक दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अगेन. लेट मी टेक अनदर कॉपी ऑफ दिस एंड मैं रखता हूँ इसको इधर. And let me go to this image adjustments and replace color. replace color पे जाके मैं इसको करता हूँ click, means ये वाला area that has been selected, and selection के बाद मैं यहाँ से जाके इसकी hue and saturation को थोड़ा थोड़ा मैं करता हूँ change. Right, so have a look at this one. ये देखिए जनाब, जो जहां पे ये एक्सपेरिमेंट आपका, ये जो भी आपकी चॉइस का कलर निकले, दैट इज समथिंग. एक ही से दूसरी और दूसरी से तीसरी, ये डिफरेंट चीजें आप अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से यू कैन बी वेरी इजली यू कैन क्रिएट ऑल दो सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस. करेक्ट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये आपने एक्सपेरिमेंट करना है. उसके बाद वी कम अप विद द सेकंड वर्जन. अब सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं. हाउ कैन यूज एक ही शर्ट के अंदर मल्टी कलर्स आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजाइन लेवल, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल जो फैशन डिजाइनर्स जिसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, वी आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट ऑल दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो हाउ कैन यू डू इट? लेट्स सपोज मैं F7 से जाके लेट मी डिलीट दिस वन. क्लियर नहीं आ रही, सो दैट मीन्स लेट मी ओपन अप माय माइक. अब आवाज आ रही मेरी? अब okay, let me check what is the problem. I don't think so. Okay, is there anything wrong? Yeah, but there's no problem. Agar in case any confusion which raises up, so you can go through it again. Clear to me. So that means ये हो नहीं सकता कि कुछ के लिए clear है कुछ के लिए not clear. So voice is clear. Perfect. Thanks. अच्छा जी, let's get back to the basic things. हमने क्या करना था? हमने इस एक के अंदर ही different variations को create करना है. For example, we are experiment on this shirt. So the layer has been selected. So let's suppose I'm interested कि मैं यहाँ से एक चीज almost इस level तक, okay, and यहाँ से almost इस level. Sorry, what I've done, sorry, I made a mistake. Control D means deselect. I made a mistake. Let's suppose मैं दोबारा से यहाँ से जाके इस वाले एरिया को सिलेक्ट कर देता हूँ so that कि कोई confusion ना रहे. I'm pretty sure this has been selected. Anyway, have a look at this one now. Okay, thanks. Have a look at this one now. The area has either this or maybe this. इन दोनों में से select inverse करेंगे तो ये वाला एरिया select हो जाएगा. Okay, this has been out. या let's suppose we are interested only in this color के इसके ऊपर हम experiment करें. Okay, what you can do is with the help of just same tool आप इधर आए और यहाँ से लेकर let me experiment with this one और ये आपने ज्वाइन किया. सो दिस इज आर एरिया जिसके ऊपर हमने फर्दर एक्सपेरिमेंट करना है. ओके, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट यू कैन डू इज
इस सेलेक्टेड एरिया को यहां से कट करके दोबारा यहीं पे पेस्ट कर दें। फर्स्ट कंट्रोल एक्स and drag control plus shift plus alt plus v. Okay, so that means we are almost done with the, yeah, that's the one. देखिए ये हमारे पास दोबारा आ गया. Now you know that it's a different one, it's a different one, but otherwise as a naked eye you might not be figure out which one ये कहाँ से actually इस time कट हुआ है. Okay, so अब हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा. सो हम जल्दी से इसको पिक करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं सो दैट के आपके पास क्लैरिटी आ जाए. Right, so that has been selected, and let's suppose now let's move to this image adjustments and brightness and contrast and have a look at this. अभी ये ग्रीन में ही there's another yellow scheme which is actually pop outs, लेकिन choice is yours, आप जिस भी तरीके से इसको करना चाहें that is one option, right? So इसके हिसाब से आप instantly जाके आप एक design के अंदर you can come up with a separate sort of designs. Okay, now as you know this is separate one, this is separate one, and this is separate one, so you can do the same experiment on this as well. Correct? How we can do is, for example, baseline key, this is the copy we are interested, let's make something different with this. Okay, how can you do it? Image adjustments, and I was mainly interested to go for black and white, and just press OK. That's it. I'm interested, half of them is the black and white, the remaining is in colors. So that's how you come up with your basic things. अब अगर मैं आपसे कहूं कि अब इसके ऊपर कोई प्लेस करें अपना डिजाइन, अपना सॉरी आर्टिकल, अपना कोई भी लोगो, अब आप उसके साथ प्ले करना शुरू करें. एंड द आइडिया इज कि दिस इज समथिंग विच कैन बी प्लेस्ड एज योर वाइटन. वाइट कलर का अगर किसी का लोगो है दैट वुड परफेक्टली बी फिट इन हेयर. लेकिन अगर किसी का लोगो इज इन डार्क कलर में, लेट्स सपोज टेक्सचुअल या कोई फिगर डार्क कलर में दिए हुए, दैट कैन बी प्लेस्ड एट दिस प्लेस because background and the front, that has to be contrast. That's how you can reach to that ultimate level. Let me share my whole screen with you and let me go to this uh, fashion design, and let's suppose I'm mainly interested, let's suppose something like this. Okay, let me bring out this one and place it somewhere here. Okay, and this is something I want to double click. Okay, and place it at the top, right? So you can do ज़रा ये this is not as such कोई इतना prominent चीज नहीं है. Like this is something a very much floral type of thing, लेकिन this would not definitely work at perfectly here. I'm mainly interested and concerned कि आपका अपना brand और logo यहाँ पे place हो. I just this thing as an experiment. Okay, and automatically जब आप इसको place करेंगे on the yellow one, तो somehow due to this multi colors ये बड़े visible हो जाएगा. But this happens because sometimes this work and sometimes it doesn't work. So I have plenty of things to share with you. So मैं जल्दी से switch करता हूँ hearts के अलावा. What you can do is there are so many things. For example, let me come up with something like this. ये मैंने वो सारी की सारी चीजें हैं जो इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूंगा, एंड आप इन सारी की सारी चीजों के ऊपर बेस करते हुए आप अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. ठीक है ना? सो हैव अ लुक एट दिस वन. जैसे ही आपकी ये चीज कंप्लीट होगी, द आइडियल थिंग इज कि इसके बाद अब आपके होंगे फर्दर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट्स. वो एक्सपेरिमेंट्स कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल आप लेयर से जाके नीचे ब्लेंडिंग मोड्स पे जाते हैं, लेयर के ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर, एंड मल्टीप्लाई करते हैं इसको. नाउ हैव अ लुक एट दिस कि एक चीज क्या से क्या बनती जा रही है. यू वुड नॉट बिलीव इट. आई थिंक मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलेंगे अब आप लोग. मैं F7 से इस लेयर को ओपन करता हूं एंड मल्टीप्लाई के बजाय डार्कन, एंड हैव अ लुक एट दिस. व्हाट डू यू थिंक? What do you think? This
is something amazing work which is indeed it is amazing indeed and मुझे I wish के आप लोग मेरे साथ साथ बिल्कुल वैसे ही चलें जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ and you got to believe me on this असवंद मिनाहिल रुबाब अजरा I'm telling you is माशाल्लाह इतनी लंबी लिस्ट है you all are amazing फाइजा and मैं आई जस्ट डू नॉट वांट रुबाब आई जस्ट डू नॉट वांट कि मैं किस किस का नाम लेकर बताऊं एंड आई जस्ट वांट कि यार आप लोग आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट एंड अर्ज प्लीज इसको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करें द वे आई एम टेलिंग यू एंड यकीन करें इतनी अमेजिंग चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी आपको यकीन नहीं आएगा उससे राइट अब आप फर्दर चॉइस इज योर्स आप इसमें एक्सपेरिमेंट करें आप इस पे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें फर्दर ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन करके देखें वुड दैट वर्क्स और डू यू थिंक दिस विल नॉट वर्क if this doesn't work so no problem you go with multi different options color burn पे चले जाएं and have a look at this is a kind of 3D look इसकी आना शुरू हो जाएगी and right so linear burn and there are plenty of इतनी amazing चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी with the help of dark color scheme now have a look at this वैसे आप कोई भी caricature कोई भी आर्ट वर्क जो मर्जी आप बना लें आप ये चीज अचीव नहीं कर सकेंगे कभी सो दैट्स व्हाट दी होल एम ऑफ दिस इज के मैं आपको ये सारी की सारी डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने रखूं सो दैट कि आप इनमें से ये एक्सपेरिमेंट्स करें ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आई एम प्रीटी श्योर के यू विल बी एबल स्पेशली whosoever is interested in the मेल क्राफ्ट्स या मेल के आर्ट वर्क के ऊपर या उनके ब्रांड्स में मेल की टी शर्ट्स या शर्ट्स या कोई भी ऐसी चीज आती जा रही है उनके लिए आज का सेशन इज लाइक आई मीन मैं क्या बोलूँ आप स्काई इज द लिमिट्स जितना आप बनाना चाहें इसे खूबसूरत आप बनाते जाएं राइट मैं इस तरह की और चीजें आप लोगों से शेयर कर देता हूं सो दैट के लेट सपोज अगर उसमें से कोई भी इंटरेस्टेड है फॉर एग्जांपल if you are interested in something like let's suppose इसके बजाय let's suppose let me take up this picture and let's place this one here okay and sorry let's place this one here मैं जल्दी से double click and let me off this one and this is the color scheme जिसके ऊपर अब हम experiment करेंगे and have a look at this one multiply and color burn or anything whatever जो भी आप करना चाहते हैं now sky is the limits करते जाएं and दुआएं देते जाएं मुझे right so you can place it here either you can place it here what you can do is make a copy of this and first copy could be at this place the remaining would be this one control plus T transform से इसको जाके flip horizontal करें and let's make it somewhere at here and what do you think will this work and maybe and sky is the limits I just want कि आप इसके बजाय JF-17 यहाँ पे लगाएं फाइटर एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन लगाएं मैं एग्जैक्टली मैं शेयर कर दूंगा अजरा ये सारी की सारी चीजें ग्रुप में शेयर करना शायद मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड नॉट बी बिकॉज उससे डाउन हो जाएंगी आई एम मेनली इंटरेस्टेड कि आप इनमें से मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लिंक्स रखता जाऊंगा आप वहां से ऑटोमेटिकली यू कैन डाउनलोड दी ट्रांसपेरेंसीज को आप डाउनलोड करेंगे और उससे फर्दर आप एक्सपेरिमेंट्स करते जाएंगे राइट सो दैट्स इट आई थिंक मैं इससे ज्यादा और करना नहीं चाह रहा सो स्काई इज द लिमिट्स जो भी आप चीज करना चाहते हैं दैट इज वेरी मच योर चॉइस इज योर्स इंस्टेड ऑफ दिस इफ yeah I think this one is pretty good and now मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पे किसी न किसी आपके ब्रांड को इस तरह प्लेस कर देता लेट्स सपोज AKZ समथिंग लाइक दिस या जो असफंत का ब्रांड वाज व्हाट वाज दिस AK-47 sorry असफंत व्हाट वाज AKZ okay so AKZ is something like you have to do it okay I just want कि आप ये एक्सपेरिमेंट्स खुद से करें एंड लेट्स शेयर दैट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये सारी की सारी चीजें आप मेरे साथ शेयर करें राइट आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि आपकी ये सारी की सारी चीजों को हम इंटरनेशनल मार्केट में एज एन ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करवाएं और नई से नई क्रिएटिव से क्रिएटिव आउटपुट्स निकालना शुरू कर दें